I now invite Dr. Meghna Sharma, Assistant Professor, Department of History, to share her observations. Dr. Meghna Sharma. Meghna ma'am, you're not audible. सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित समस्त विभूतियों को सादर वंदन करते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष कुलपति महोदय प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर का अभिवादन करते हुए और मुख्य अतिथि श्री महेश चंद्र शर्मा साहब का अभिनंदन करते हुए अपनी बात आरंभ करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल सर को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने एक उत्कृष्ट रचना का सृजन ऐसे काल में किया जिसने मानव की दिशा ही मोड़ कर रख दी। मशीनीकरण के अंधाधुंध युग में हम जिस गति से बढ़ रहे थे उस पर लगाम लगाने का काम कोविड-19 ने किया और इस प्रकार का लेखन कर्म इन अनुभवों को लंबे अंतराल तक जीवित रखने का, उनसे सबक लेने का, उनके प्रभावों का व इस दौरान खोजे गए समाधानों को सम्मिलित करता एक मजबूत दस्तावेज साबित होगा, ऐसी मेरी भावना है। अब चूंकि पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष अंग्रेजी में ही बांटना चाहूंगी। Rise COVID stories of Hemang Rastra very well begins with the word dharma in its preface, where the author says that dharma is a certain way of living that is aligned with the grand plan of humanity. The first section of the composition sings the stories of the unsung COVID heroes. The stories herein talk about day-to-day happenings, drawing out conclusions from our food habits and style of living besides others as well. The word Hemang Rashtra brings in itself a feeling of serenity, oneness, sacredness imbibed in the diverse culture of our nation. We can say, of course, that it is a systematic compilation of the stories scattered around us with a very logical approach and attitude. The author talks about the environmental changes which occurred during the pandemic by saying that pigeons have taken over the village, town, city, courtyards, peacocks roam free in the streets. The present work moves down the memory lane of history and reminds us all that there are cemeteries in Hemang Rashtra, one located in Metropolis, wherein lies buried the literary and historical figures such as Henry Louis, Vivian Dorazio, Sir William Jones, Colonel Robert Kidd, Lieutenant Colonel Colin Mackenzie, Major General Charles Stewart, and so forth. The author has jotted down stories of the milkmen, the railmen, farmers, plumbers, scavengers, whom he called Swachhata Senanis instead of the word scavengers. Now see, this is the beauty of this composition. The most unprivileged have served the privileged class in this pandemic, and their role has been noticed well by humanity and the author as well during the turbulent times. Police is mostly criticized for its high-handedness and bribery, he says, and to which I totally agree, and generates little trust in the eyes of common men. But coronavirus crisis and the subsequent lockdown have brought out a less seen and compassionate side of police. Look at the topic of 18th story, which says, God doesn't judge dark skin, he judges dark hearts. The author is a man of letters, is proved by his writing, where he compares recent circumstances with the past examples and writes that a judge sanitizes his hand after certain time intervals. This reminds one of Jaggers in Charles Dickens' A Tale of Two Cities, who washes his hands every time after he meets a client. पुस्तक के दूसरे हिस्से में लेखक बात कर रहे हैं उन श्रमिकों की, उन कामगारों की जो लौट रहे हैं अपने घरों की तरफ, जो मरना नहीं चाहते अपने अपनों के बिना। उनकी पीड़ा को उकेरती ये पुस्तक बखूबी एक दस्तावेज साबित होगी आने वाले समय में, जहां बात होगी उन कारणों की जिन्होंने आधुनिक काल में माइग्रेशन या यूं कहें प्रव्रजन को प्रोत्साहित किया। लेखक की कहानियां घूमती हैं हेमांग राष्ट्र स्थित एक कस्बे श्रीरंगधर के आसपास, जहां मुझे याद आ जाती है आर के नारायण की मालगुड़ी डेज, जिसमें उन्होंने एक ऐसे कस्बे को जीवित कर दिया। हमारे स्कूल के समय की बात है जब मालगुड़ी डेज सीरियल टीवी पर आया करता था, दूरदर्शन के जमाने की बात है। एक ऐसे कस्बे को जन्म दिया आर के नारायण ने जो वास्तव में कहीं था ही नहीं, कहीं है ही नहीं, किंतु हमारे जहन में आज भी जिंदा है एक फिक्शनल टाउन के रूप में।
कुछ इसी प्रकार की रचना कोविड स्टोरीज ऑफ हेमांग राष्ट्र कही जाती है, जहां श्रीरंगधर नामक एक काल्पनिक नगर है जिसके आसपास कहानी के चरित्र घूमते हैं, अपनी पीड़ा को बांटते हैं और महामारी से लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं और प्रेरित करते हैं. The third section says the hope self-reliant Hemang Rashtra. It talks about cooperative federalism, which strengthened the Rashtra and emergence of a virtual post-COVID world. The author is confident where he says that Hemang Rashtra will rise like a phoenix from the ashes, assuring us that Bharat is an incredible nation where altruism sounds everywhere. The author writes that the first mantra of Ishopnishad says, whatever moves in this world is enveloped by God, therefore find your enjoyment in renunciation. The author's pen is trusted with a strong belief how COVID would change us for better. The COVID-19 induced lockdown has shown us how quickly nature gives us back its clean air. It is for us to see this opportunity to keep our lungs clean and safe. The author has coined the word resetter and says that COVID-19 is a resetter of civilizations. उन्हें प्रोफेसर अग्रवाल को कोटि कोटि शुभकामनाओं सहित आभार, नमन, अभिनंदन. Thank you so much. Thank you, Dr. Meghna.